So hello students, today we are doing the poem Keeping Quiet, right? It's written by Pablo Neruda, and I'll tell you something about Pablo Neruda. He's the poet who's the Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto, and he won a Nobel Prize for literature in the year 1971, right? So here in this poem Keeping Quiet, he tells us the advantages of keeping quiet. Why we should keep quiet? He requests us to keep quiet for certain moments. वो अपील कर रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर हम चुप रहते हैं या साइलेंस में जाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं. ठीक है, तो उसको हम पहले पोएम पढ़ने से पहले हम अपनी तरफ से कुछ जो फायदे हैं, जो एडवांटेजेस हैं, वो लिस्ट कर सकते हैं. जैसे नंबर 1 हुआ, आई विल राइट इट डाउन फॉर यू, लाइक quiet इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन किसको बोलते हैं? व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन इज सेल्फ इंक्वायरी. जब हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, वी क्वेश्चंस आवरसेल्व्स, व्हाट हु वी आर, व्हाट डू वी वांट इन लाइफ, व्हाई दिस लाइफ इज ऑल अबाउट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. वी डू इट इनसाइड by keeping silent. चुप रहकर हम ये इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, ये सेल्फ इंक्वायरी करते हैं. Now number 2 point is peace of mind. Why do we keep quiet? To get peace of mind, right? Peace of mind, shanti. Number 3. Now number 3, I would like to tell you, it's about the feeling of mutual understanding among human beings. The more you keep quiet, you feel love for each other, respect for each other. On this earth, we have divided the earth into various discriminations, languages, creed, caste, so on and on and on. तो जब हम चुप रहेंगे तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी हमारे में. ठीक है, तो तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आई एम लिस्टिंग हियर इज फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग राइट. I'll write again, understanding among human beings, right? Human beings. Okay, can you list any other point? We are so sad in today's world. Why? Because we are in a haste. एक जल्दी मची हुई है, एक दूसरे से कंपटीशन हो रहा है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, and we lose all our peace of mind. We become sad at the end of the day. So fourth point, उदासी को दूर करता है चुप रहना. We call it removal of sadness. Removal of sadness. Okay? Then, any other point? I would like to focus on the exotic or the happy feeling, जो खुशी हमें प्राप्त होती है चुप रहने से. So exotic. Why exotic? Because it would be a strange feeling जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी अपनी लाइफ में. So it is called exotic. Exotic or the happy feeling we have from keeping quiet. Right. Any other thing? One thing is we understand each other. Then do we understand ourselves also? Yes. So understanding अपने को समझने में. Understanding our own self. Okay? Then, now what do we get? If we stop our life for some moments and we focus inside, we get increased lifespan.
जिसको बोलते हैं हमारी जिंदगी के साल जो है वो बढ़ जाते हैं. दिस इज व्हाट आई इन्फर फ्रॉम द पोएम. सो इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन. Right children, this is very necessary for you to know these points. ये points आपको पता रहेंगे तो आपको poem अच्छी तरह समझ में आएगी. Now let's see. Let's start the poem with the line. Now the poet says, now we'll count to 12 and we will all keep still. He asks us, he requests us that I'll count to 12. Does counting to 12 means count to 12 clockwise? In a way, it means he wants some moment of us. उसको कुछ क्षण चाहिए हमसे. कुछ क्षण वो चाहता है कि हम चुप रहें. और उस क्षण में हमें क्या मिलेगा उन क्षणों में? In those moments, what we'll get? He's listing the points. And we will all keep still. He's saying that we will keep quiet in these moments. Okay? He's requesting us to keep still. कि हम इन क्षणों में, वो बोल रहा है मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कुछ क्षण के लिए आप चुप रहिए और देखिए कि क्या होता है. और हमें करना क्या है कि he is instructing just to keep still for those moments. कुछ क्षणों के लिए हमें सिर्फ चुप रहना है. दिस इज द एक्सरसाइज इज गिविंग टू अस. एक्सरसाइज इज गिविंग व्हाई? वी हैव लिस्टेड द पॉइंट्स. व्हाई इज गिविंग अस दोज एक्सरसाइज ऑफ कीपिंग क्वाइट. कुछ क्षण के लिए चुप रहने के लिए वो हमें निर्देश देता है. सो नाउ देन ही सेज, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. व्हाई डज ही से सो दैट लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज? Because even the languages can create conflict, you know. क्योंकि धरती को, अर्थ को हमने इतने सारे टुकड़ों में बांट दिया है. किस तरह से? कास्ट, क्रीड, लैंग्वेजेस, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और जब हम उन चीजों के पीछे लड़ते हैं, you know, we become like fighting with each other. So he says, let's keep quiet. Don't speak in any language. I just want few moments of yours. You just have to keep quiet. आपको सिर्फ चुप रहना है. किसी भाषा में बात करने की जरूरत नहीं है. So he says, let's stop for 1 second. सिर्फ 1 second means few moments. Let's stop. आप करके तो देखो. कुछ क्षण के लिए रुक के देखो. Not move our arms so much. और ये जो हम अपने हाथ बहुत हिलाते हैं, जनरली किसके लिए हिलाते हैं? आर्म्स जो हम हिलाते रहते हैं, it is to destroy. You know, we use arms and ammunition. जितने अस्त्र और शस्त्र हम उपयोग में लाते हैं एक दूसरे को मारने के लिए, और फिर हाथ भी उठाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और क्रिएचर्स को भी शूट करते हैं जो दूसरे प्राणी होते हैं. तो जनरली जो ह्यूमन बीइंग है वो अपना हाथ उठाता है डिस्ट्रक्शन के लिए. वो कह रहा है कि नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. अपने हाथ ज्यादा मत हिलाएं हम. तो क्या होगा? खुशी मिलेगी. ना वो ये बोल रहा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. तो यहाँ पे विदाउट रश मीनिंग सबसे पहले एक्सोटिक मोमेंट को लेते हैं कि वो एक एक्सोटिक मोमेंट होएगा. क्यों एक एक्सोटिक मोमेंट होएगा? मीनिंग स्ट्रेंज, फुल ऑफ हैप्पीनेस, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको इतनी खुशी मिल जाएगी इस मेडिटेशन से. इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन ही हो रहा है जब आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अंदर आईज क्लोज कर रहे हो या ओपन कर रहे हो और फोकस कर रहे हो अंदर. आप क्या चाह रहे हो अपनी लाइफ से? आप क्यों रुक रहे हो इन क्षणों में? बिकॉज यू डोंट वांट डिस्ट्रैक्शन, यू वांट पीस ऑफ माइंड. तो ये कह रहा है कि वो एक ऐसा मोमेंट होएगा, इट वुड बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, इट विल बी फुल ऑफ स्ट्रेंजनेस एंड विदाउट रश. विदाउट रश मतलब जल्दबाजी में नहीं होंगे हम. हमें उससे आगे निकलना है, हमें उधर दौड़ना है, आज उधर जाना है. सो विदाउट इंजन्स. नाउ इंजन्स हेयर सिंबलाइजेस द मशीन्स. कि मशीन्स के बिना, उस इंजन्स के बिना, मशीन्स के बिना वो क्षण कैसा होगा? इट वुड बी वेरी एक्सोटिक. वी वुड ऑल बी टुगेदर. हम सब पास आ जाएंगे. यू नो, उन क्षणों में, इन दैट सडन स्ट्रेंजनेस हम सब पास आ जाएंगे.
It would be sudden strangeness, अचानक से होगा ये सब. It would be strange for us. Why? Because हमने पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया. तो वो ये जो strange सा, ये जो अजीब सा क्षण है, क्यों अजीब है? पहले महसूस नहीं किया और बहुत खुशी होगी इस क्षण में, वो बोल रहा है. Now he comes to the fourth para, that is fishermen in the cold sea would not harm whales. इसका क्या मतलब हुआ? फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन होते हैं वो किसको हार्म करते हैं? वेल्स को कैच करते हैं ना. तो हम यहाँ पे इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि वो जो दूसरे क्रिएचर्स हैं अर्थ पे जिसको कि ह्यूमन बीइंग हार्म करता है, वो भी स्टॉप करे. फिशरमैन हियर सिंबलाइजेस दोज पीपल हु हार्म द अदर क्रिएचर्स. और वो कर क्या रहा है? दूसरे प्राणियों को नुकसान पहुंचा रहा है. कहां पर? कोल्ड सी के अंदर, ठीक है, समुद्र में. एंड वुड नॉट हार्म वेल्स, वो क्या करेगा? कुछ देर के लिए विश्राम करेगा और नुकसान नहीं पहुंचाएगा. किसको? वेल्स को, बड़ी मछलियां जो होती हैं. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, एंड ऑल्सो द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. एक तो हम दूसरे क्रिएचर्स को, दूसरे प्राणियों के प्राण संकट में डालते हैं. एंड द अदर थिंग इज दैट वी ऑल्सो हर्ट आवरसेल्व्स, हम अपने आप को भी चोट पहुंचाते हैं. तो ये सेइंग, जो इसका एग्जाम्पल वो दे रहा है कि जो आदमी नमक को गैदर कर रहा है, नमक इकट्ठा कर रहा है, वो अपने जो हर्ट हैंड्स हैं, हर्ट हैंड्स मतलब जो चोट पहुंचे हुए उसके हाथ हैं, उसको वो देखेगा कि मैंने अपने हाथों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है नमक इकट्ठा करके. तो जितनी सारी एक्टिविटीज वो बता रहा है पोएट, वो है दूसरे क्रिएचर्स को नुकसान पहुंचाना और अपने को भी नुकसान पहुंचाना. ये दोनों एक्टिविटीज वो कह रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगेन एंड अगेन टू स्टॉप दीज एक्टिविटीज एंड रेस्ट फॉर सम टाइम, डू quiet introspection, do meditation, focus on yourself, right? So then he says, those who prepare green wars, कुछ लोग जो ग्रीन वार्स प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं, ठीक है. ग्रीन वार्स, यू अंडरस्टैंड, वार्स अगेंस्ट नेचर, जो प्रकृति के विरुद्ध जो हम युद्ध कर रहे हैं, यू नो, दोज ग्रीन वार्स. And 3 types of wars is telling us here. One is green wars. Second is wars with gas. Gas, you know, no? Okay. And wars with fire, arms and ammunition. So 3 types of wars is referring here. Number 1, green wars. Number 2, wars with gas. Number 3, wars with fire. He says if we are preparing for all these wars, ये सारे युद्ध हम तैयार कर रहे हैं और जब कोई बचेगा ही नहीं, एक दूसरे को मार देंगे सब, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, हमारे पास ऐसी जीत हम हासिल करेंगे जिसमें कि कोई सर्वाइवर ही नहीं होएगा. कौन टेस्ट करेगा उस विक्ट्री को? विक्ट्री माने जीत. उस जीत को कौन शेयर करेगा जब अर्थ पे, इस धरती पर ही कोई प्राणी नहीं बचेगा, एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं सब, ये वार्स प्रिपेयर कर रहे हैं. सो ही सेज लेट अस he says would put on clean clothes. Who would put on clean clothes? He says ये लोग जो wars की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर ये साफ कपड़े पहन के, हम क्लीन क्लोथ्स या वाइट क्लोथ्स या नीट क्लोथ्स कब पहनते हैं, वो एक शांति का सूचक है. एंड वी आर क्रिएटिंग ब्रदरहुड अमंग्स आवरसेल्व्स. तो इसीलिए वो कह रहा है कि हम क्लीन क्लोथ्स डाल के, साफ कपड़ों में, वी वुड वॉक अबाउट एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स. एक दूसरे के साथ हम भाईचारा करने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, राइट. इन द शेड डूइंग नथिंग. व्हाट डज शेड स्टैंड्स फॉर? शेड का मतलब क्या होता है? जब हम पीस ऑफ माइंड होता है, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम शेड में होते हैं. तो वो बोल रहा है इन द शेड डूइंग नथिंग, शेड में हम वॉक करेंगे और वी वुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग, जस्ट वॉकिंग विद आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ चलेंगे, साफ कपड़ों में चलेंगे. And this would symbolize what? That we are understanding each other, we are creating friendship with each other, right? Then he says what I want should not be confused with total inactivity. वो कह रहे हैं कि
जो मैं चाहता हूं उसको ये मत समझना कि मैं आलसीपन बता रहा हूं, मीनिंग टोटल इनएक्टिविटी. टोटल इनएक्टिविटी मीनिंग्स व्हेन वी आर इनएक्टिव, वी डोंट डू एनीथिंग आउट ऑफ लेजीनेस. He says, I am not preaching you that. I am not telling you that. Life is what it is about. Life is very fantastic. It is what it is about. Life is good. But I want no truck with death. Truck here, association. मैं कुछ समझौता नहीं चाह रहा हूं मौत के साथ. मैं कोई मौत की बात नहीं कर रहा हूं. I'm not talking about death. I'm not dealing with death, in fact. No association with death, I'm telling you. What I'm telling, if we were not so single-minded about keeping our lives moving. Single-minded होता है ना, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, हम सोच लिया वही करना है, तो हम कर क्या रहे हैं सिंगल-माइंडेड होकर कि अपनी जो लाइफ्स है, अपना जो जीवन है, वो एक ही दिशा में खींचे चले जा रहे हैं, एक ही दिशा में चले जा रहा है हमारा जीवन. एंड फॉर वंस को डू नथिंग, वो कह रहा है एक दिशा में सिंगल माइंडेड होकर एक ही दिशा में जाने से अच्छा है. एक ही दिशा में मतलब भागने से. वी कीप ऑन रनिंग रनिंग रनिंग. ही सेज स्टॉप फॉर अ व्हाइल, स्टॉप फॉर अ व्हाइल. एंड ही सेज वंस को डू नथिंग, थोड़ी देर के लिए, वंस एक पल के लिए, डू नथिंग, ऐसा क्षण आए जब हम कुछ ना करें. डोंट डू एनीथिंग. परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद ये जो एक बड़ा कदम है, एक बड़ा साइलेंस है, बहुत बड़ा साइलेंस रहेगा, ये बहुत बड़ा साइलेंस मीनिंग चुप्पी रहेगी एक, जब हम सब चुप रहेंगे. माइट इंटरप्ट, और ये जो ह्यूज साइलेंस है, जो बड़ा साइलेंस है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस. ये जो हमारी सैडनेस की फीलिंग आ रही है ना भागने दौड़ने से, जो हमारी सैडनेस है दिमाग में, सैडनेस मीनिंग उदासी, उस उदासी को दूर करेगा ये. It will remove this sadness. What will remove the sadness? Again, this huge silence. And ये sadness क्यों है? Of never understanding ourselves. क्यों हमने अपने आप को कभी समझा नहीं है. We have not understood ourselves. And of threatening ourselves with death. और हमेशा हम अपने आप को खतरे में डालते आए हैं, threaten करते आए हैं. किसके साथ? Death से. डेथ से हम अपने आप को थ्रेटन करते आए हैं. हम अपने आप को मौत के मुंह में डालते आए हैं, इतना चल चल के और इतना दौड़ दौड़ के. यू नो, ही इज टेलिंग अस दैट. एंड एट लास्ट ही सेज, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस. शायद ये धरती हमें कुछ सिखा रही है. क्या? एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ आपको लगता है ना अर्थ पे खत्म हो गया है, शांति हो जाती है. स्नोफॉल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्नोफॉल. स्नोफॉल होता है, तो जब स्नोफॉल खत्म हो जाता है, वो सीजन बीत जाता है, तो पौधे फिर से पनपते हैं. डोंट द प्लांट्स कम अप. तो कह रहा है अर्थ पे जब सब कुछ खत्म होता प्रतीत होता है, पर फिर भी वहां पर जीवन है. अर्थ पे हमें लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, हुआ नहीं है. एग्जाम्पल मैंने बताया, स्नोफॉल हुई है, चली गई, उसके बाद फिर से पौधे लहलहाएंगे. सो लाइक दैट. नाउ आई काउंट अप टू 12. नाउ ही सेज इन द एंड दैट आई काउंट अप टू 12. मैं 12 तक काउंट करूंगा. मीन्स ही वांट्स सम मोमेंट ऑफ आस. ही वांट्स सम मोमेंट ऑफ आस. ही सेज आई काउंट टू 12. यू कीप क्वाइट. यू डू दिस एक्सरसाइज ऑफ कीपिंग क्वाइट. आप शांत रहिए, चुप रहिए. And I will go. When my purpose will be served, you will feel peace and love and mutual understanding, the happy feeling, understanding of yourselves, understanding of each other. We'll have increased lifespan. You'll have all these advantages, and I will go. Then I will go. My purpose is served. Thank you. Let's start with the questions now from the textbook itself, right? Then I'll come to the paragraphs. So, the first question, think it out. First is, what will counting up to 12 and keeping still help us achieve? I've listed these points in the very beginning, students, that what will counting up to 12 and keeping still help us achieve? It helps us achieve quiet introspection, that is self-inquiry, peace of mind, feeling of mutual understanding among human beings,
removal of sadness, exotic or happy feeling, understanding our own selves, increased lifespan. And more you can list from here. If you find it more points, you can go about like keeping still can help us stop harming the other creatures and our own selves. Stop harming the other creatures and our own selves, right? This can be the additional point. Then question 2 is, do you think the poet advocates total inactivity and death? Do you think he's in the favor of total inactivity and death? No. He is not in the favor of total inactivity and death, because what he is telling us is about keeping silence. Keeping silent. What can we achieve by keeping silent? Again, you can highlight the points that by keeping silent, he means to make our minds at rest, to bring our minds at rest, and not total inactivity or death. And why do we need that rest? Because that can remove the sadness of never understanding ourselves. That can remove the sadness of never understanding ourselves, right? Okay. Now question 3 is, what is the sadness that the poet refers to in the poem? The sadness he talks about is of never understanding ourselves, of threatening ourselves with death. How? By rushing and keeping our lives moving. Okay? By keeping our lives moving, we come or we feel this sadness. By keeping ourselves moving, we experience this sadness. The 4th question is, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? The poet gives us the example of the earth. When earth seems to be dead, but it later proved to be alive. I've given you the example. For example, during the snowfall and after the snowfall, there we can observe life after the snowfall. So it gives us the example of the earth, which teaches us that if everything seems dead, but it later proves to be alive. Okay, I'll come to the paragraph now. Now the poet says, now we will count to 12 and we'll all keep still. Now why does the poet want to count to 12? Why does the poet want to count to 12? We have already discussed. The points I highlighted in the beginning, they carry all the answers actually. So he wants to count to 12 in order to keep quiet, in order to make us quiet for some moments. And why he wants us to be quiet for some moments? Again, you can highlight the points: for quiet introspection, peace, mutual understanding, removal of sadness, happy feelings, understanding ourselves, increased lifespan. All these I have discussed, right? Okay. Now he says, for once on the face of earth, let's not speak in any language. Why does he ask us not to speak in any language? What will go wrong if we speak in our own languages? The answer is, it can create a feeling of discrimination, again disturbing the minds, whereas he wants to focus on the peace of mind or quiet introspection, right? So he asks us
not to speak in any language. Now coming to the third para, he says it would be an exotic movement. Now why that movement would be exotic? What will happen in that exotic movement actually? The movement is called exotic because it would be without the rush, without the haste, without engines or machines. And that would be exotic because we all will be together. We will experience mutual understanding amongst the human beings. So this movement is called strange or exotic, right? Now, what do we infer when the poets say fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands? What do we infer? Here, he wants to specify that the fishermen who harm the whales, in a way, it refers to the human beings who harm other creatures. And when he says the man gathering salt would look at his hurt hands, meaning we also harm ourselves. So what he wants to say is that we should not harm other creatures and we should stop harming ourselves, if not lifelong, at least for some moments, so that we can have this moments of silence with us, right? Now those who okay, he says what kind of three vase is referring to here? Three kind of vase the poet is referring here. What kind? Number one, green vase. Number two, vase with gas. Number three, vase with fire. Another question comes up that why he needs us to put on the clean clothes and walk about with our brothers. As he has explained, the answer is that this would stop the war between nations or the civil wars. This would stop the wars when we walk about with our brothers in the shade, and doing nothing means we'll have time for quiet introspection, self-inquiry, and we would respect each other's feeling. We'll have the feeling of mutual understanding, right? So then he says what I want should not be confused with total inactivity. Now what does he mean when he say that it should not be confused with total inactivity? Because he is not dealing with death. He is not dealing with something which is inactive. In fact, what is the activity going on inside? The activity is not outside. It's still going on inside. Which kind of activity? Quiet introspection, peacefulness, mutual understanding, happy feeling. These activities are going on inside. So he says he does not want any association with death. Now, how can this huge silence interrupt this sadness? This huge silence can interrupt this sadness as we will be inquiring ourselves, we'll be doing quiet introspection, we'll be feeling happy, we will have peace of mind, and we'll understand ourselves, right? So it will remove sadness. Now what kind of sadness is he referring to? He's referring to the sadness of never understanding ourselves, and we threaten ourselves with death when we are in a haste, we are in a hurry all the time. The rush of human beings and the rush of engines, machines. So he says perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count to 12 and you keep quiet and go. Now
Which examples he give? Like what can make us understand that even when everything seems dead, but it later proves to be alive? The example of the earth. When earth seems to be dead, but it still proves to be alive later. Like I have given you the example. For example, during snowfall, it seems the earth is dead. But later, you can see the plantations coming out, the sprouting, and the life on earth. Thank you.